So Agrasali Super Kings, the opening batters came into bat, and batter GK Bhatt and Vignesh, the opening batters, came into bat. They won their first match, and they're playing their second match. Team Agrasali Super Kings. Here comes the first ball. Saurav starts with the warm-up delivery of the evening. Bowled outside the line of leg stump, and white called by umpire, so that team Agrasali Super Kings, they are off the mark. One without loss of any wicket. Right arm over wicket bounce. This time pulls it away straight to the hands of mid wicket, and no chance of any run. And one without loss of any wicket. Saurav again back to his bowling mark with a short run up. Right arm over the wicket to GK Bhatt. This time played it gently down to cow point region. They picked up a quick single. With that single, scoreboard moves on to 2 without loss of any wicket. GK Bhatt is off the mark with a single, and total score now 2 without loss of any wicket. Vignesh Bhatt will going to take the strike. Vignesh, in fact, and played it straight into the mid-off, not for run. Good piece of fielding by the fielder at mid-off. No run scored. Vignesh Kamath will going to take the strike. Saurav again. Good start so from Saurav, excluding that one wide. He maintained the line and line. This time pulls it away, and good stop. Excellent stop. You need to deal with that extra bounce in the legation. Need to get some extra jump to stop the ball. And meantime, Vignesh completes a single. With that single, scoreboard moves on to 3 without loss of any wicket in the over number. First is in progress. So Saurav again back to his bowling mark. GK Bhatt will go in to take the strike. Pass the umpire. Cuts it, and misfielded by the fielder. After that, good stop. Then one sloppy fielding there by the fielder. Couldn't manage to read that movement. Of course, the deviation after when batsman cuts the ball, the definitely ball will go into turn a little bit, and the fielder not really able to judge that one well. The welcome boundary for the team, and Agrasali Super Kings are 7 without loss of any wickets. Last time in this over, this time pulls it. A good stop by the fielder, and there are chance of run out, but of course Anantesh fails to gather the throw from the fielder. Completed single, first over completed. After completion of first over, Agrasali Super Kings are 8 without loss of any wicket against Gopur Gladiators. Man of the match of the previous matches goes to Nagaraj Pai. So that I request Nagaraj Pai, please go to the main stage and collect your man of the match award from our chief guest. What a match. That was absolutely fantastic chasing by Sringeri Rising Stars. And even Pawan is also contributed from the bat, a young man who becomes the man of the series in the last edition, season 3. And he and Nagaraj played the match-winning innings for the team. So Nagaraj ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Beautifully bowled, just outside the line of off time. We're going for the dry, missed it completely. Wicketkeeper behind the stump did the rest. Back to bowler. Right arm over the wicket balls. This time I played it into the deep and out of the park, and the ball went out of the park, and even batsman is also going out of the park because of that full shot. मंजेश्वर प्रवीण कामत आणि वेदिके राहिल्यांची अंक स्वागत करता म्हणून निमून घेता सर. तशी ती नागराज पै विकी फुडले मॅचाक मॅन ऑफ द मॅच म्हणलेलो आसा. तुम्ही हांगा वेदिकेर येवका ट्रॉफी कलेक्ट करूंक. Previous match, man of the match, Nagaraj Pai, I kindly request you to please go to the main stage to collect your man of the match award from our chief guest. And the new batter, of course, Vivek, one who played a match-winning knock for his team in the previous match, came into bat. Straight away, just he wanted to go for the sweep shot, missed it completely. Anantesh, the experienced campaigner, brought into attack. Anantesh Pai from the commentary box, and second time in this over. And this ball full toss, played it down to mid-off region. They're quickly going for the single.
Little bit late reaction from the fielder at mid-off to return the throw, and both the batter completed the single. With that single, Scoburn moves on to 9 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. That brings Vignesh into strike. Anantesh ball, lovely delivery, and equally well played there by Vignesh, just reading the slow delivery of Anantesh very well, and played it gently down to point region for a single. 10 for 1 in the over number second in progress. Anantesh again back to his bowling mark, second time in this over. Right arm over the wicket, played it up easily. The second batsman playing that one out of the park. And wicket number 2 gone. Anantesh picked up a wicket after completion of over number 2. Total score is 10 for loss of 2 wicket. And it's not a good start here for the team. Agrasali Super Kings lost their opening 2 batters too early. And they got only 10 runs on the board. नेक्स्ट मॅच सुधींद्रा वॉरियर्स वर्सेस दंबेकल्लू चॅलेंजर्स. दोन्ही टीम कॅप्टनांना तुमगेल टीम रजिस्ट्रेशन डेस्का रजिस्टर करका दोघांके फर्स्ट कॉल. The bowler brought into attack Pundalik. The Pundalik brought into attack to bowl the this time pulls it away down to square leg region for single boundary there, and with that boundary Scoburn moves on to 14 on the board without for the loss of 2 wicket. 14 for the loss of 2 wicket. So good full shot there from Vignesh, getting that short pitch delivery and getting that position very quickly. Again pulls that one nicely, back to back 2 boundaries. So needed some acceleration in the run rate, and they are of course Vignesh taking the initiative of getting some boundaries for his team. Back to back 2 boundaries and takes the total score into 18 now for 2. Again played it gently down to mid-off region for an easy single. With that single, Scoburn moves on to 19 for the loss of 2 wicket. Fourth time in this over. Pundalik balls played it down to mid-off region for an easy single, and with that single, Scoburn moves on to 20 for the loss of 2 wicket. Akshay picked up his first run from the bat, and Pundalik again round the wicket, right arm. Played it again in the air for a while, but all along the stroke they went for the quick single, directed up, but umpire says it's not out. No damage done. Good running with the wicket and good understanding. No hesitation from these 2 batters to complete that complete that single run, and with that single, Scoburn was on 21 for the loss of 2 wicket. Third time in this over. Akshay is on strike. Pundalik again, right arm over the wicket balls. Lovely delivery. The batter Akshay just wanted to make a little bit room to play the shot, but he's just following the batter and bowled a beautiful delivery into the leg of the batter. 3 overs completed. It's a better over from the point of view of team Agrasali Super Kings after completion of over number 3. It's 21 for the loss of 2 wicket. सुधींद्रा वॉरियर्स टीम कॅप्टन रिपोर्ट करका. सेकंड कॉल सुधींद्रा वॉरियर्स. Ramesh is a new bowler, experienced campaigner. Ramesh to continue. 4th over of the innings of the ball down the leg side. Going to be a wide, one more extra. 22 for 2. 2-2-2. 22 for loss of 2 wicket in the over number 4 is in progress. And Agrasali Super Kings searching for the right track. Lovely delivery, and this time ball is in a good length spot. Not that much of a shot enough for the batsman to go for the full shot. The good line bowled by Ramesh. Good comeback after that wide ball. Second time in this over. Away from us. Bowled him, cleaned him up. Nowhere near the pitch of the delivery. Tried to play across the line. Pays the penalty for that.
Wicket number 3 back in the pavilion. Vignesh departs. Just try to play across the line, going for the pull shot. But just like I mentioned, they're not really able to get the position to go for the pull shot. Pays the penalty for that. And uprooting all 3 stumps. And wicket number 3 gone. It's 22 for 3. New batter in is Ajit. But experienced player for the side of Agrasali Super Kings. Ramesh to continue. Successful bowler, got a wicket of a well-settled batsman Vignesh. Aditya Bhatt played it down to square leg region. They're going for the single chance of run. Oh, direct it might be all over. Direct it might be all over for Aditya Bhatt. Ball just going over the stumps. They completed a risky single, 23 for 3 in the over. Number 4 is in progress. Ramesh. So far, good comeback by Ramesh after that wide in the first ball. Now Akshay came back to strike after a long time. This time a beautiful shot, diving effort there from the fielder, but not good enough to stop the boundary. The welcome boundary, the runs which is dried in this particular over, and Akshay just a little bit making room to play the shot. Just going back, just have a look at the replay. Short pitch one, going back, plays it nicely, and the effort from the fielder is not good enough. So with that boundary, Gopur moves on to 27 for 3 in the over. Number 4 is in progress. Here comes Ramesh again. Right arm over the gate, drives that one down to be down. Good piece of fielding there by the fielder. One more dot ball. Excellent comeback from Ramesh. As he bowled a little bit Yorker and delivery right on the block hold. 27 for 3. Final time in this over. And bowler Ramesh will go into deliver. The last delivery of the penultimate over. Again, going for the cut shot. Anantesh not really getting his 2 hands to make the run out, to direct it, but no problem. And umpire called it end by call by umpire. It's the end of the over number 4. It's 28 for 3. Sudhindra Warriors team final call. Numgal captain ನೀವು register karka. I request the Sudhindra Warriors kindly request you to please register our players' name and please cooperate with the organizers. So next match will be played between Sudhindra Warriors versus Dambekallu Challengers. (28 for 3). Over number 5 will go into start. Mohan brought into attack. Mohan Pai away from us. To Akshay. Akshay slashed it beautifully. And the boundary signal by umpire. Fantastically struck. Short pitch delivery all the time in the world for Akshay. Just stood tall on the crease and slashed that one into the cover point for 4. And the slow short pitch delivery. And the batsman have to control the stroke. And got a boundary for that. 32 for 3. Again played it. Oh, this is going to be out. And they played it in the pull and outside the boundary line. And it's a 32 for 4. And of course, Akshay just tried to repeat the stroke once again. Short pitch delivery outside the line of off stump. And this time a little bit extra power, which is takes the ball into the out of the park. And it's 32 for 4 in the over. Number 5 is in progress. So new batter walking towards the middle. Prathamesh Nayak coming to the middle and replacing the place of Akshay as he back in the pavilion of the bowling of Mohan Pai. This is the last over in progress and third time in this over. Right arm over the kitty balls. This time went for the full shot straight to the answer fielder, but it's not a good direction to throw. The opportunity for the run out in the non-striker's end, and he completed. Prathamesh Nayak completed single. With that single scored moves on to
33 for 4 in the over number. Last is in progress. Here comes next delivery. Right arm over the wicket. Ball this time. Ajit Bhatt played it out of the park, and he is also walking out of the park. And just looking for the improvising cricketing stroke, but couldn't manage to keep it down. Played it in the air, and ball went out of the park. And just have a look at the replay, and helping it down and gone outside the boundary line in full. So one more wicket back in the pavilion. It's 33 for 5 in the over number. Last is in progress. Last 2 deliveries left. And a new batter coming to the middle. Anish Bhatt, the man of the match of the previous match. Anish Bhatt came into bat here to contribute. Last 2 deliveries left in their innings, and wait and see how well he's going to contribute. One for the cut shot, missed it completely. One more dot ball. So last delivery of their innings is coming up. Last delivery of Agrasali Super Kings, which is in progress. Again, played it down to mid-off region. They're going for the quick single, and the one again, 2-3 fielders, absolutely. They are trying to stop the single. By doing that, they completed 2 valuable runs altogether. I think no damage done. In fact, 35, I think, which is the score. They completed a couple of runs. And 36, which is the target, which is set for the team of Gopur Gladiators. That means the Gopur Gladiators bowlers did a great job to restrict their opposition for 35, and they set a target of 36 to win this match. And wait and see how quickly they will go and get this total. Agrasali Super Kings will go into chase this total. We take a short break here. Thank you. Challengers toss win fielding choose अग्रसाली सुपर किंग्स और उनकी पारी की शुरू यहाँ पर होते हुए पहली गेंद को मोड़ दिया। स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंची, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। पहले बल्लेबाजी करते हुए अग्रसाली सुपर किंग्स के बल्लेबाजों ने 35 रन बनाए। 36 रनों का लक्ष्य उन्होंने रखा और इस वक्त गोपुर ग्लैडिएटर्स जो कि पहले बल्लेबाजी यहाँ पर करता हुआ, इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट पर फैंटास्टिक फील्डिंग। दिस इज एन आउटस्टैंडिंग फील्डिंग मेड बाय द मिड विकेट फील्डर। जहां तक सवाल है, चौका वहां पर बचाने में सफल और स्कोर इस वक्त रुक चुका है यहाँ पर 0 पर। 2 बेहतर गेंदबाज फेंक चुके सी के भट्ट और अगली गेंद लेकर तैयार। फैंटास्टिक डिलीवर। दिस इज एन आउटस्टैंडिंग वन फ्रॉम द बॉलर। Just wanted to follow that one at the last moment, not succeeded. The ball gets some extra bounce at the last moment and went into the hands of wicketkeeper. This is an outstanding delivery from GK Bhatt. गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों बढ़ता विकेट। इस बार गेंद को खेलना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, बट ही गॉट अ सिंगल। 1 रन इस वक्त मिलेगा और 1 रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। 1 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर और गेंदबाज सीके भट्ट अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। सामना करते हुए दिलीप पाई और दाहिने हाथ ओवर द विकेट
फुल टॉस स्टीयर करना चाहा गेंद को, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज सीके भट्ट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। ये गेंद स्टीयर किया इस वक्त अंतिम एक्शन में, 1 रन का इजाफा, 1 added to the total. Fantastic over came from CK Bhatt, just 2 runs conceded by him, and after first over chasing the victory target of 36 in 5 overs set by Agrasali Super Kings. Gopur Gladiators made a slower start. In fact, it's 2 for none after completion of first over. And let's straight away coming back to the equation. 36 minus 2, that means 34 runs more are required in remaining 4 overs. And the asking run rate is now gone up exactly 8.5 runs per over. 24 गेंदे 34 रन और चाहिए विजय के लिए। ठीक 8.50 रन प्रति ओवर के औसत से, और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए अक्षय कामत, और सामना करने के लिए तैयार दिलीप भाई। ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अक्षय, लेग स्टंप से बाहर, स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड, और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। अगर 36 रनों के लक्ष्य तक पहुंचता है तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन शुरुआत यहां पर देनी होगी बल्लेबाजों को। एंड पल्स एंड इज गॉन, it's gone this time. Just pulled that one, but full tossly the ball went over the fence. First wicket gone, it's 3 for 1. This is the match number 5 of the junior category. Is now progressing here. 10 prestigious teams are participating in this junior category, and match number 5 of the day 2 of this prestigious cricket tournament, SVT Trophy 2026 GSB Volunteers Premier League Season 4 is now progressing here fantastically in this Canara High School ground. And this tournament is proudly presented by SVT Volunteers Association, Cast Street, Mangalore. और जहाँ तक सवाल है मेन स्पॉन्सर आभरण ज्वेलर्स, और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो अक्षय इस वक्त गेंदबाजी करेगा। नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, रमेश कामत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अक्षय की गेंदों का, और अक्षय गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार इन द एयर बट फेल जस्ट शॉट ऑफ अ फील्डर एट पॉइंट एरिया, जस्ट टेक द शॉट एट लास्ट मोमेंट, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी भाग पर टकराने के बाद कुछ हद तक उछलते हुए और आखिरकार 1 रन बल्लेबाज यहां पर प्राप्त करते हुए इस 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। और अक्षय फिर से एक बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पुल्स एंड दिस टाइम ही फाइंड्स द गैप, फैंटास्टिकली पुल्ड इट अवे आफ्टर फर्स्ट बाउंस, द बॉल वेंट ओवर द फेंस एंड अ फैंटास्टिक स्ट्राइक केम फ्रॉम द बैट ऑफ अनतेश पाइजे, और इस चौके के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 8 रनों पर 8 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और अक्षय एक बार फिर से गेंदबाजी लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अगेन ही फाइंड्स द गैप, फैंटास्टिकली टू स्ट्राइक केम फ्रॉम द बैट ऑफ अनंतेश भाई, और इन 2 चौकों की बदौलत अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर। और शॉर्ट गेंद थी और बल्लेबाज के पास काफी समय था कि गेंद को इस वक्त खेल सके। देखिए किस तरीके से गेंद को खेला था, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्ट्राइक। अब टीम के अन्य खिलाड़ी कुछ समझाते हुए इस वक्त गेंदबाज अक्षय को किस सही लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त उन्हें गेंदबाजी करनी चाहिए, और गेंदबाज इस वक्त अक्षय तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज अनंतेश भाई इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। बेहतर गेंद थी, दैट्स द लाइन ही हैज टू बॉल एट दिस सिचुएशन, जस्ट मिसिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट, और गेंद सीधे पहुंचे इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। द स्कोर स्टेज एट 12 for 1 इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। अगली गेंद अक्षय, this time turns it around on the corner, gone through with a quick single and get it comfortably at last. 1 run added to the total, 13 on the board, and over number 2 has been came straight, and 2 gone, 13 on the board, 23 to get from remaining 18 delivered. The equation stands for Gopur Gladiators, and the required run rate, as far as the required run rate is concerned, exactly 7.66 runs per over, the required run rate for them at this situation. And still in overall calculation, it's going to be 9 wickets they got kept intact, 9 wickets they got in their hand. और तीसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ, third over starts in the innings, the bowler starts of fresh proceedings is Vignesh Pai,
इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए और तीसरा ओवर उनके पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए 18 गेंदों में 23 रनों की दरकार। बराबर का टक्कर इस वक्त जारी ये दोनों टीमों के बीच इस मैच में। और गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिने हाथ तो बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए जस्ट मिसिंग आउटसाइड द लेग स्टंप वाइड डिक्लेयर्ड बाय अंपायर। और गेंद लगभग लेग स्टंप से कुछ दूरी पर निकले थे। वाइड का इशारा इस वक्त हो चुका है और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और विघ्नेश भाई अगली गेंद लेकर तैयार। बेहतर गेंद फैंटास्टिक डिलीवरी just wanted to work it on the outside but the ball got his outer of the bat. In fact it's a leg, the ball struck his leg in fact, and the batsman got a single for that stroke in the face of leg by. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 17 गेंदें बाकी 21 रन चाहिए। और विघ्नेश भाई इस वक्त तैयार। रमेश कामत जो कि सामना करते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट। विघ्नेश ये गेंद फुल टॉस गेंद को ड्राइव कर दिया एक्स्ट्रा कवर पर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल। यूजिंग हिज फीट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले और गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन के लिए। और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 1 रन के साथ 16 रनों पर 16 for 1 नाउ 20 runs required from 16 deliveries। और विघ्नेश अगली गेंद लेकर तैयार। लेग स्टंप से बाहर वाइड अगेन जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड एट द लास्ट मोमेंट। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 17 रन इस वक्त चाहिए गोपुर ग्लैडिएटर्स के बल्लेबाजों को। वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए ज़रूरी नहीं है और इस बात को मद्देनजर रखते हुए गोपुर ग्लैडिएटर्स के बल्लेबाज रन बनाने का हर तरीके का प्रयास हर तरीके की कोशिश यहाँ पर करते हुए बॉल्ड आउट इनसाइड एज ऑन टू द स्टंप्स जस्ट ट्रैक्ड ऑन टू द स्टंप्स एट द लास्ट मोमेंट। और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। अनंतेश भाई जो कि 2 चौका लगाने के बाद काफी आक्रामक नजर आ रहे थे। यहाँ पर हल्के से गेंद को पुश करना चाहता और देखिए यहाँ पर रिप्ले पर हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले जस्ट वांटेड टू पुश दैट वन गॉट इज इनसाइड एज जस्ट ड्रैग डाउन टू द स्टंप्स एट द लास्ट मोमेंट एंड अ vital wicket lost. Anantesh भाई departs and the second wicket lost for Gopur Gladiators. It's 17 for 2. निस्संदेह यहाँ पर अनंतेश भाई का विकेट का पतन कुछ हद तक ड्रॉबैक जरूर साबित हो सकता है यहाँ पर गोपुर ग्लैडिएटर्स के बल्लेबाजों को। और मैच का जहां तक सवाल है अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा मैच इस वक्त बराबरी पर रुक चुका। दोनों टीमों के समर्थक सपोर्टर्स अपनी टीम का मनोबल बढ़ाते हुए इस वक्त तालियों के साथ सीटियों के साथ और इस बीच नए बल्लेबाज सामना करते हुए विघ्नेश की ओर के अगली गेंद का पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा मिड विकेट पर गेंद पहुंची 1 रन मिलेगा जस्ट सिंगल ही गॉट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 18 रनों पर 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और विघ्नेश अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार सामना करते हुए इस वक्त रमेश कामत 2 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए विघ्नेश फुल टॉस टर्न्स इट अवे डाउन टू मिड विकेट गॉन थ्रू अ क्विक सिंगल एंड गेट इट comfortably at last. 1 run added to the total 19 on the board for losing 2 wicket. Still a ball left in this over and still in overall calculation it's going to be 17 runs to get and 13 balls remaining. Still, I must say it could be anybody's game at this situation. Or Vignesh, last time in this over. Here he comes, left arm round the wicket. Leg stump se bahar, just drifting down the left side. Wide declared by umpire. और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 20 रनों पर। Now 16 to get from 13 डिलीवरीज। रनों की सख्त जरूरत इस वक्त गोपुर ग्लैडिएटर्स के बल्लेबाजों को जबकि डॉट गेंदे और विकेटों की सख्त दरकार अग्रसाली सुपर किंग्स के गेंदबाजों को। और इस बीच विघ्नेश फुल टॉस ड्राइव कर दिया मिड विकेट पर रन के लिए दौड़ पड़े 1 रन मिला जरूर जस्ट अ सिंगल ही गॉट single to end the over and 3 overs completed. After 3 overs the equal battle is now still on. It's 21 for 2, 15 to get from 12 deliveries. That means remaining 2 overs. This is the match number 5 of this prestigious cricket tournament in a junior division is now progressing here. SVT Trophy 2026 GSB Volunteers Premier League Season 4 is now progressing fantastically in this Kendra High School ground and this tournament is proudly presented by SVT Volunteers Association, Castit Mangalore. Official sponsors Abharan। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो अजय इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए अजीत माफ कीजिए इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए अजीत भट्ट और सामना करने के लिए तैयार सौरभ भक्ता। और ओवर की पहली गेंद लेकर
गेंदबाज तैयार अजित दाहिना तो पर विकेट इस बार खेल दिया खूबसूरती के साथ पंजों पर उछलते हुए रन के लिए दौड़ पड़े एक रन पर गेंदबाज को मिला जस्ट अ सिंगल ही गॉट स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 22 नाउ 14 runs to get from 11 deliveries दर्शकों का जोशो उत्साह यहाँ पर बढ़ता हुआ मैच एक दिलचस्प मोड़ पर यहाँ पर आकर रुक चुका है बराबर का संघर्ष जो कि यहाँ पर जारी है और अजीत भट्ट इस वक्त तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर दाहिने हाथों पर विकेट फुल टॉस ड्राइव किया स्ट्राइट ऑन द ग्राउंड एंड ही फाइंड्स द गैप एज वेल ही फाइंड्स द गैप एज वेल और इस चौके के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा समीकरण काफी हद तक आसान हो चुका था इक्वेशन सीम्स टू बी मच इजियर नाउ विद दिस बाउंड्री और बेहतर स्ट्रोक था इस वक्त बल्लेबाज रमेश कामत का फुल टॉस गेंद थी हैव अ लुक एट दिस द रीप्ले ही जस्ट प्लेड दैट वन जस्ट वाइड ऑफ द नॉन स्ट्राइकर एंड बैट्समैन एंड फाइंड्स द गैप एज वेल इट्स स्ट्रेट एरिया फॉर अ बाउंड्री फैंटास्टिक स्ट्राइक नाउ इक्वेशन स्टैंड 10 of 10 हियर वी गो अगली गेंद लेकर तैयार कट किया खूबसूरती के साथ कवर पॉइंट पर मिसफील्ड एक रन मिलेगा 1 run they got in fact now 9 balls remaining 9 runs more now they have to score for victory निश्चित रूप से आप अगर कम बैक करना है तो अग्रसाली सुपर किंग्स के गेंदबाजों को यहाँ पर डॉट गेंदों की सख्त दरकार चंद डॉट गेंद यहाँ पर जरूर फेंकने होंगे फिलहाल तख्ता इस वक्त भारी लगता हुआ गोपुर ग्लैडिएटर्स का और अजीत भट्ट अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था ना तो बड़ा विकेट ये गेंद ड्राइव किया ओह he misses straight down the ground hit that one for a boundary the bowler misses on his follow through and with this boundary I must say Gopur Gladiators are now strongly back in the game have a look at this in the replay he just played that one and the ball passed between the bowler's legs and it's crossed over the fence for a boundary at long off now equation seems to be much easier now for them 5 to get from 8 deliveries 5 रन सिर्फ चाहिए 8 गेंदें बाकी और कम बैक करने के लिए इस वक्त अग्रसाली सुपर किंग्स के गेंदबाजों को लगातार डॉट गेंदे यहाँ पर फेंकने होंगे और अजित भट्ट इस वक्त तैयार दाहिने हाथों पर विकेट स्टीयर किया खूबसूरती के साथ डाउन टू थर्ड मैन इनफैक्ट इट कट्स इट ऑफ जस्ट इनसाइड द विकेट ब्रिलियंटली बाय द फील्डर जस्ट अ सिंगल द बैट्समैन गॉट स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 32 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है अजित भट्ट इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए 4 to get from 7 deliveries last time in this over the bowler bowls cracks it away finds the gap as well that's it for this match Gopur Gladiators are won the match with exactly 1 over to spare that means 6 balls left they reach the target of 36 runs for losing 2 wicket and a fantastic knock played by the batsmen of Gopur Gladiators. So have a look at this in the replay. He just punched it away through the offside. Square of the wicket at the last moment. Got a boundary for that. So 8 wickets. Comprehensive victory for Gopur Gladiators.